Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with the topic first. Today is 7th of July. The first topic is Rajasthan to develop corridor connecting 3 tiger reserve. This is important for environment question in the prelims examination. Second, GST collection fall back below 1 lakh crore mark. The government has estimated that this would increase, but we have seen a downfall in that. Third, open network for digital commerce project. What is this? We'll understand in detail. The other is truth about oxygen debt during the COVID-19 second wave. This is an editorial from Indian Express. There's other editorial from the Hindu which talks about vacancies send a wrong signal. So the vacancies which are pending is definitely hampering the governance of this country. Apart from all this, there would be some MCQs question at the end of this video. This question would be based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination. So those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Now starting the session with the first news, that is Rajasthan to develop corridor connecting 3 tiger reserve. This is an important decision, and basically when this type of question is there in the news, you have to concentrate on the map work. Map यहाँ पे इस context में बहुत ही ज़्यादा important हो जाती है. Now for mains examination, this is important for your general studies paper 3 as a photo point. You can use it in the conservation, environmental pollution degradation and EIA. So let's understand the detail of this news. So recently the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has approved the conversion of Ramgarh Vishwadhari Sanctuary. This is there in the Rajasthan Bundi district, right? So these names are important, and this is the 4th tiger reserve that would be coming up in the state. जो नई प्रपोजल थी टाइगर रिजर्व के लिए, दैट इज देयर इन द बुंडी डिस्ट्रिक्ट, इज कनेक्टिंग द रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, मुकुंदरा हिल्स रिजर्व इन कोटा डिस्ट्रिक्ट, राइट? So this is how this would be connecting. I will show you a map that will help you understand. Now जो proposal है, this would convert the Ramgarh Vishwadhari Sanctuary in the widespread, अगर इसकी जो location की बात करें, this is spread about 1071 square kilometers. These figure are not important, but आपको याद रखना है कि कितना एक average क्या length है, right? Into a tiger reserve was recently approved by the नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो उनके टेक्निकल कमिटी है NTCA की, उन्होंने अप्रूवल दिया है. द अप्रूवल ऑफ NTCA इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एनीथिंग इज बीइंग मर्ज्ड या ओवरटेक करने की बात होती है. नाउ टाइगर रिजर्व इन राजस्थान की बात करें, इन 2018 एज पर द एस्टिमेट ऑफ टाइगर सेंसस, टोटल टाइगर वाज 102 in Rajasthan, namely 3 important वहाँ पे sites हैं. First is Ranthambore Tiger Reserve, which is there in Savai Madhepur. Second is Sariska Tiger Reserve in Alwar, and Mukundra Tiger Hill Reserve, which is there in Kota, right? So if you combine all of them, the total number of tiger that was reported in the census were 102. Now this is a map, Ramgarh Tiger Reserve की अगर बात करें, you can see this is a tiger reserve. This is Jaipur region, this is Kota. The color signifies core, buffer and forest department. So this is a region for the Ranthambore Tiger Reserve, and this is Jawahar Sagar Sanctuary, which is also known as MHTR, right? So these are something, this map work is very important. अगर आपसे पूछा जाए rivers के बारे में या फिर जो physiography है उस region की physical geography point of view से, these points become very important. Now the other news, that is GST collection fall below 1 lakh crore mark. Important for your general studies paper 3, inclusive growth and issues arising from it. So there is some shortfall in the collection of GST. What are the factors that would impact GST collection? इस तरह के जो implications वाले questions है, that is important for the prelims point of view. So the good and services tax GST जो है उसकी जो total collection है for the month of June, that stood for 92,849 crore, right? This is the first fall from 1 lakh crore mark in the 8th month. Since September 2020, we are seeing the decreasing trend. However, expert ने ये कहा है
कि आउट ऑफ द कलेक्शन वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, इट वुड प्रोवाइड कुशन फॉर द गवर्नमेंट कि वो अपने स्पेंडिंग को रैम्प अप कर सके, बढ़ा सके. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जीएसटी की अगर बात करें, जो स्टेट के साथ पेंडिंग सेस हैं वो भी अभी पेंडिंग है. स्टेट्स हैव नॉट गेट उनकी जो पूरी रिक्वायरमेंट थी, जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट एलोकेशंस की गई थी स्टेट को देने की बात की गई थी, द प्रोमिसेस हैज नॉट yet been made by the central government. So it would be again very important that how distribution would take place. Now talking about the trend of the GST collections, according to the data released by the finance ministry, उन्होंने कहा है इस बार जून में it's 92,849 crore rupees against 1.02 trillion which was there in the May, and 90.917 crore a year ago. So this trend we have seen before COVID. It was there was some positive trend that we have seen in the overall economy, but after COVID-19 the collection has drastically decreased due to decrease in the several reasons, right? बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से ये expected downfall देखी गई है. So the June collection was expected in line of daily e-way bill generations की बात करें, indicating about the supply in economy. This has completely dropped down in 15 months of this pandemic, and average 1.2 million in May. Now during the May 2021, most of the states were under the either complete lockdown or partial lockdown due to COVID-19. Because of the reason, the collection has deteriorated or decreased. Now गवर्नमेंट ने ये कहा है दे वुड बी मैनेजिंग द रोबोस्ट जीएसटी कलेक्शन. उन्होंने हाईलाइट किया है कुछ इन्फोर्समेंट के मेजर्स लाइक मॉनिटरिंग द फेक बिल्स, डीप डेटा एनालिस्ट टू बी यूज्ड फ्रॉम द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस दे वुड बी यूटिलाइजिंग इन जीएसटी. इनकम टैक्स की बात की जाए, कस्टम्स, आईटी सिस्टम, ये सारी चीज़ों को इफेक्टिव बनाई जाएगी ताकि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है दैट शुड बी वर्क इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर, एंड द कलेक्शन शुड इंक्रीज वंस वी जो लूप होल्स हैं उनको फाइंड करके उनको टेक किया जाए. सो दिस मिसमैच कैन अगेन ओवरकम. ईजर कंप्लायंसेस हैज आल्सो इनकरेज द रिटर्निंग ऑफ फाइल्स. सो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं. This has also helped in the ramping up of the tax collections. Now this is an infograph that will help you understand about the trend that we've seen. You can see in the May it was almost close to basically between 75 to 37 bracket. It has increased in January, even in this particular month in the May we've seen in the crores, but in June again this has deteriorated, right? This for this month it is 92,849 crores. Now, Open Network for Digital Commerce project. This is from the Indian Express. Important for your general studies paper to comment policies and intervention for the development of various sectors. So, Department of Promotions for Industries and Internal Trade, also known as DPIT, उन्होंने recently एक order issue किया है for appointing the advisory committee for its Open Network Digital Commerce project, right? ONDC project is very very important for your prelims examination. इसके जितने भी features point हैं वो आप समझ लें. This can be a possible question in the upcoming prelims examination. So we'll understand what is this ONDC project all about. So इसकी जो पूरी aim है is to curb the digital monopolies. जितनी भी digital monopolies, even government ने जो digital content है उसको monitor करने के लिए, regulate करने के लिए बहुत सारे और भी rules लेकर के आए. So it is a step in the direction of making e-commerce process open sources, क्योंकि we have seen that many e-commerce have also reported with the fraud and some other to prevent this happening in country. These type of project is required. So this would thus create a platform जहाँ पे it can be utilized for the online retailers. We have seen that e-commerce is again because of the lockdown, the e-commerce level has increased, like Amazon, Flipkart, and other people coming. The new domain is also coming in India. So the task of this project has been assigned to the Quality Council of India. So QCI के बारे में कुछ जो important provisions हैं वो आप देख लें. QCI is again something which is very important, right? Quality Council of India is a body which you have to read and make sure आप इसके जो important points हैं QCI के बारे में वो देख लें. So the process expected to open sources with this project, right? अब open sources क्या है? How this project will help? So some
ऑपरेशनल एस्पेक्ट कुड मेड ओपन सोर्सेज लाइन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की अगर बात करें सो ऑन बोर्डिंग सेलर्स, वेंडर डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी और प्रोडक्टिविटी जो कैटलॉगिंग है दैट विल हेल्प। और इसमें ई कॉमर्स कंपनी के साथ ये मैंडेट की गई है, देयर कैन बी a problematic large e-commerce company which have proprietorship operations, right? जो उसकी जो प्रोसेसेस होती है प्रोप्राइटरशिप्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, इस सारे सेगमेंट्स में भी गवर्नमेंट काम कर रही है विथ दिस पॉलिसीज। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन सोर्स की अगर बात करें सो मेकिंग सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स मीन्स दैट कि वन स्टेप प्रोसेस होगी दैट वुड बी अवेलेबल फ्री फॉर द अदर यूजर, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए। जिस तरह से कोविन ऐप को भी ओपन सोर्स बनाया गया फॉरेन कंट्रीज के लिए, सो आप कुछ हद तक उससे रिलेट कर सकते हैं। Now, Google's Android operating system is an open source and therefore it is possible for the smartphones, right? Now, if ONDC की बात करें, this is implemented and mandated. It would mean कि जितने भी e-commerce companies है would help and operate using same processes, right? And this will give a huge booster shoots to small online retailer and new entrants. जितने भी नए entrepreneurships खास करके इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स हो या फिर टेक्नोलॉजी के एरियाज में हो, पीपल आर कमिंग एंड एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर रिटेल चेन. So what are the rationale behind ONDC project? This can be a question that can be asked in the mains as well. So ONDC की जो promotions है open network को लेकर के, that is basically calling for an open source methodology जो कि कुछ चीज़ों को यूज़ करेगी like open specification and open market network protocol, independent or any specific platform. जो benefits की बात करें, digitalize the entire value chain. Digitalization has become something very important post COVID and definitely the things would regulate it more digitalized manner. Standardize होगी operations की, promotion and inclusion of supplies, derive efficiency in logistic and enhance the value chain for the consumer. So ultimately to enhance the consumer experience and to boost the sectors, these type of measures of ONDC would definitely help the e-commerce. Now, vacancies send a wrong signal. This is important for your general studies paper 2. This is important for the 2 governance, important aspects of the governance, transparency, accountability, and e-governance applications. So what is this all editorial about? क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस की गई इस एडिटोरियल में? I'll be discussing in 3 important topics. First is post waiting to be filled, PIL that was filed in the Supreme Court, and impact of the vacancies which is pending. And the theme of this editorial, इस editorial की जो मेन थीम है जिस बारे में बात की गई है, उसमें कहना है कि जो वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, उसकी क्या इफेक्ट होती है गवर्नेंस पे और क्या नेगेटिव फीडबैक जाती है पूरी वर्कफोर्स पे. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एज वेल, केस स्टडीज़ की बात की जाए वहाँ पे भी आप बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स यूज़ कर पाएंगे. नाउ कमिंग टू द डिटेल ऑफ दिस एडिटोरियल, व्हाट एडिटर वांट टू से, उन्होंने कहा है कि जो वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, इवन इन द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर एक्टिंग एज अ डेल्टीरियस इफेक्ट इन गवर्नेंस. जो गवर्नेंस पूरी है स्टेट में या फिर सेंटर में, उसकी जो फंक्शनिंग है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द वैकेंसी एंड नॉट फुलफिलिंग द वैकेंसीज ऑफ द टॉप मोस्ट पोजिशंस इज अफेक्टिंग द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट एज वेल एज फॉर द सेंटर. सो टॉप पोजिशंस की बात करें, द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसीज रिमेन वैकेंट. मैं आपको बताऊंगा किन किन पोजीशंस में वैकेंसी अभी भी पेंडिंग थी और रिसेंटली ही उनको फुलफिल किया गया. So delays in the promotions, this is again a bigger issue. Apart from vacancies, promotion and appointments not only affect the organization but also tend to demoralize the official. जो उस ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, इवन जो प्रमोशंस के लिए लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो वैकेंसीज क्रिएट होगी, सो दिस क्रिएट अ लेवल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, राइट, एंड इट डेफिनेटली इम्पैक्ट द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. सो कुछ ऐसे पोस्ट थे दैट वाज वेटिंग फॉर द फुलफिल्ड. बेसिकली अभी भी अगर बात करें, द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज केप्ट वैकेंट टिल जून, राइट, दिस ईयर. अगर प्रीवियस चेयरमैन जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके थे, एच एल दातू, सो उनके बाद अभी भी दिस पोजीशन वाज रिसेंटली. पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द CBI, they were again recently appointed. So what has been suggested, like जितने भी पोस्ट हैं उनको एडवांस में फिल करने की ज़रूरत है. We'll understand that on the recommendation of this editorial. PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उस PIL में
एडीआर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने एक पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट एक तो वेल एडवांस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, और जो अपॉइंटमेंट है उस दूसरे केस में लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई और द सेंटर, ये 3 चीज को लेकर के इन्होंने पीआईएल फाइल की है। एडीआर का कहना था, जो लॉ कमीशंस के रिपोर्ट हैं 255th रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर कमिटी की जरूरत है व्हेन वी आर हैविंग अपॉइंटमेंट फॉर द इलेक्शन कमिश्नर्स। सो व्हाट वाज सजेस्टेड थ्रू हाई पावर कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और 2 और मेंबर्स होंगे लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशंस, राइट। सो अगर लीडर ऑफ अपोजिशंस की बात की जाए तो उनकी जो से होती है सिलेक्शन प्रोसेस में वो बहुत कम होती है, राइट, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर एज वेल। सो प्राइम मिनिस्टर ने जिस पे डिसाइड कर दिया सीजीआई अगर कंसेंट करते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसेंट उतनी ज़्यादा वेट नहीं रखती है, राइट। सो देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड द हाई पावर कमिटी। दिस इज व्हाट हैज बीन डिमांडेड इन द पीआईएल दैट वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द वैकेंसीज विच इज स्टिल पेंडिंग, जो डिलेज होती है अपॉइंटमेंट में, एक रॉन्ग सिग्नल है पूरे नेशंस के लिए, दैट शोज दैट द governance of this country is moving in a slower pace and they do not want the red tapeism to be cut down, right? तो वैकेंसीज की अगर बात करें जो इतनी लॉन्ग पीरियड तक एक तरह से पैरालाइज होती है, दैट ऑल्सो पैरालाइजेज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट क्रिएट अ नेगेटिव सेंटिमेंट्स ओवर देयर ऑल्सो। और गवर्नमेंट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीफ्स की बात करें, चीफ्स एंड वाइस चीफ्स फॉर द मंथ, एक मंथ एडवांस करने की ज़रूरत है। जो भी रीजंस हों, बेसिकली व्हाट मिनिस्ट्रीज कैन डू, व्हाट द अपॉइंटमेंट कमिटीज कैन डू, दे कैन एटलीस्ट इंश्योर कि जो भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो 15 days to a month एडवांस में बता दी जानी चाहिए, राइट। A time frame need to be worked to announce a top appointment at least a month in advance. This is what the recommendation has been, and this would promote more efficiency to the particular government or the organization. And leaving top post in the government unoccupied affects the governance and demoralize the officers also. To have an effective leadership, the organization can only run when you have the effective leadership, and that too the people would be aware that he is going to be our next chief, right? So government definitely need to work upon this. This would definitely enhance the morale of a particular organizations. Now the other editorial from Indian Express, truth about oxygen debt during the COVID-19 second wave, right? So this is again important for the general studies paper 2, issues related to development and management of health. So what has been discussed under this editorial, so दो important subtopics हैं, like this is a small editorial, but no, the editorial which I choose is again important because it has its relevance in the case study and other general studies paper. So that due to oxygen shortage in hospital and investigating committee that need to be there before they actually count the number of deaths, right? So the theme of this editorial is oxygen shortage and hospital mismanagement. So the second wave of COVID-19 pandemic has highlighted the unequipped Indian healthcare system. We know that there were acute shortfall that have been seen in many hospitals, both in urban as well as in rural areas. And the number of the cases has spiked. The daily positivity rate were increasing. As of now, we are reporting less number of cases, but during March and April, we have seen a drastic second wave impacting the entire country. Now, among the other shortages of oxygen, hospital have added an extra toll in this number, right? We were already grimmed by the situation of pandemic, and the shortage of oxygen has added the number, the toll to be increased with the multiplier effect. Now, lack of proper official record keeping, undercounting भी की गई है, denial of recurring themes pandemic since the first wave. Actually, we were aware that second wave would continue, and we were equally aware that ICU is something which would be required. But government and even the state government has not taken concrete measures to stockpile the demand of oxygen. And even when the situation worsened, they have simply raised their hand that we cannot help them out. Now, death during the oxygen shortages in the hospital, अगर बात करें अप्रैल से मई 19 की, we have reported so many cases among 110 hospital across the country. 629 patients have died due to this, right? And
एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिन्होंने पूरे डेटा कलेक्ट किए हैं. दे हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम पैन इंडिया and they have asked they have seen the lack of oxygen hospital has resulted into these number of deaths which account for 629 people only because of oxygen. These were reported. ये वैसे patients हैं जो कि hospital में admitted थे ना. And the figure does not include the oxygen shortages in home. ऐसे लोग जो घर पे ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस से डेथ हुई है, क्वारंटीन की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई है, एंड पेशेंट रिफ्यूज टू हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ये लोगों की रिपोर्ट तो की नहीं गई इस नंबर्स में, राइट. सो दिस नंबर माइट सीम्स यू वेरी लेस बट इट इज एक्चुअली वेरी हाई, राइट. These number are only for the patient which were actually admitted. So the highest in the number of the oxygen shortage that were single in the day in the April, we have seen 60 people dying in the hospital of Delhi, like Sri Gangaram Hospital and Jaipur Hospital. Jaipur Golden Hospital were reported 46 in a day, right? So you can see the mismanagement of the government and the hospital management, that they actually did not ask the government to do so, or whatsoever should be the reason, but ultimately we have lost the human life, and that is very crucial and important. इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाने की बात की गई है. जो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने सारी चीज़ों पर रिसर्च किया है, जो एडिटर ने लिखा, उनका कहना है कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंट ग्रुप जहाँ पे 24 इंस्टेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कमेटी को बनाने की ज़रूरत है. अगर ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई है तो, या फिर हॉस्पिटल की मिसमैनेजमेंट रही है, एवरीथिंग नीड टू बी मॉनिटर्ड, राइट. एंड कमिटी शुड बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अथॉरिटीज एज वेल एज बाय द कोर्ट्स. सो in some cases, the investing committee has led to the revisions of figures. They have pointed out undercounting and underreporting. बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने जिस पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया, जिनको वापस कर दिया, उन पेशेंट्स की भी नंबर काफ़ी हाई है, एंड दे ऑल्सो नीड टू बी मॉनिटर एंड टेकन इन टू कैलकुलेशन. बिकॉज अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगी हुई है कंट्रीज में, उसके तहत कुछ कंपनसेशन देने की जरूरत है. सो ये these people would also be there in the list so that they could also be equally compensated, right. And official nationwide count motivated volunteers, जहाँ पे अगर डेथ की बात की जाए, due to the lack of oxygen, that ensures that public should be equally acknowledge the fact that yes, this death were reported because of the shortage of oxygen. मोर ब्रॉडली अगर बात करें, देयर इज अर्जेंट नीड टू एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट हो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, एंड एफर्ट शुड बी मेड to improve the healthcare and oxygen supply. Although most states, specifically giving an example about Delhi where a lot of cases were reported and deaths were also reported, the government has installed its own oxygen capacity. They're building more and more. So they have improved a bit, but these lessons need to be taken for each and every state, and they should have a sufficient supply of oxygen for the hospital. The medical oxygen that is required, the cryogenic tanks that are required should be installed in the proper capacity, right? So this could be the way forward that you can conclude in your answers. Now coming to the MCQs question of the day, before I proceed with the question, just to tell you the answers of yesterday questions. For both the question, the correct option here is C. Now consider the following statement with regards to Maitri Setu project. Maitri Setu symbolizes the bilateral relations and friendly ties between India and Sri Lanka. The project is being taken up by the Land Port Authority of India. So what you have to do, if you know the correct answer, you have to write that answer in the comment section down below. Participate, practice more and more so that you get benefit at the end of this. Basically जो examination है, real examination है, उसमें आपको actual benefits मिले. Second, the joint military exercise Dustlik 2 is between India and Sri Lanka, India, Japan and Russia, India and Afghanistan, India and Uzbekistan, right? So I think many of you must be aware of this answer. If you know, do let us know in the comment section down below. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs question. And we have offered for you that a subscription can be availed at the price of 1500. This include the courier charges and the last date of registration at 8 July 2021. So do check it out whether you have subscription of this or not. This will help you to grasp all your current affairs, right? I've provided a dedicated link in the description of this video. So this was all about the news. If you have any other concern, you can let us know
We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.